today we are going to start exercise 2.1, that is first is zeros of a polynomial. So कहते हैं consider a polynomial 5x का क्यूब minus 2x का स्क्वायर plus 3x minus 2. ठीक है, कहते हैं if we replace x by 1 everywhere in px we get that is p1 is equal to 5 into 1 का क्यूब minus 2 into 1 का स्क्वायर plus 3 into 1 minus 2, that is equal to 5 minus 2 plus 3 minus 2 is equal to 4. So we say that the value of px at x is equal to 1 is 4. Similarly p0 is equal to 5, 0 का क्यूब minus 2, 0 का स्क्वायर plus 3, 0 minus 2 is equal to minus 2. कहते कैन यू फाइंड p पे पावर p का पावर -1 की वैल्यू. तो कहते एग्जाम्पल 2. सो एग्जाम्पल 2 में कहते फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. तो पहला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1. सेकेंड है QY is equal to 3y का क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट ऑफ 11 एट y इक्वल टू 2. थर्ड है PT is equal to 4t और 4 प्लस 5t का क्यूब माइनस t का स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल टू a. एज कहाँ पे t इक्वल टू a पे निकालना है. सो कहते कि सॉल्यूशंस फर्स्ट px is equal to 5x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. The value of the polynomial px at x is equal to 1 is given by p1 is equal to 5 1 का स्क्वायर minus 3 into 1 plus 7, that's equal to 5 minus 3 plus 7 is equal to 9. सेकेंड कहते हैं qy is equal to 3 y का क्यूब minus 4y plus under root of 11. कहते the value of the polynomial q y at y is equal to 2 is given by, that is q2 is equal to 3 2 का क्यूब माइनस 4 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 11 दैट इज इक्वल टू 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट ऑफ 11 दैट इज इक्वल टू 16 प्लस अंडर रूट ऑफ 11. कहते थर्ड कहते हैं पी टी इज इक्वल टू 4t प्लस 5t का क्यूब माइनस t का स्क्वायर प्लस 6. कहते द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट t इज इक्वल टू a इज गिवन बाय पी ए इज इक्वल टू 4a पावर 4 प्लस 5a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6. कहते नाउ कंसीडर द पोलिनोमियल px is equal to x minus 1. What is p1? Note that p1 is equal to 1 minus 1, that's equal to 0. So as p1 is equal to 0, we say that 1 is a 0 of the polynomial px. Similarly you can check that 2 is a 0 of qx, whereas qx is equal to x minus 2. In general we say that a 0 of a polynomial px is a number c such that pc is equal to 0. You must have observed that the zeros of the polynomial x minus 1 is obtained by equating it to 0, that is x minus 1 is equal to 0, which gives x is equal to 1. We say that px is equal to 0 is a polynomial equation and 1 is the root of the polynomial equation px is equal to 0. So we say 1 is the 0 of the polynomial x minus 1 or a root of the polynomial equation x minus 1 is equal to 0. Let us now consider the constant polynomial 5. Can you tell what is 0 is? Question mark. It has no 0 because replacing x by any number in 5x power 0 still gives us 5. In fact, a non-zero constant polynomial has a non-zero. What about the zeros of the zero polynomial? By convention, every real number is a 0 of the zero polynomial. So first check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2.
तो कहते हैं let p x equal to x plus 2, p2 is equal to 2 plus 2 is equal to 4, p minus 2 is equal to minus 2 plus 2 is equal to 0. So therefore minus 2 is the 0 of the polynomial x plus 2, but 2 is not. Example 4 कहते हैं find a 0 of the polynomial px is equal to 2x plus 1. कहते हैं finding a 0 of px is the same as solving equation px is equal to 0. Now कहते हैं 2x plus 1 is equal to 0 gives x is equal to minus 1 by 2. So minus 1 by 2 is a 0 of the polynomial 2x plus 1. कहते हैं now if px is equal to ax plus b, that is a is not equal to 0, is a linear polynomial. How can we find a 0 of px? Example 4 may have given you some idea. Finding a 0 of the polynomial px amounts to solving the polynomial equation px is equal to 0. कहते हैं now px means, कहते हैं px का मतलब क्या है, that is px means equal to 0 means ax plus b is equal to 0. So that is a is not equal to 0. So कहते हैं so कहते हैं that is a is x equal to minus b, x equal to minus b upon a. So x equal to minus b upon a is the zeros of the px, that is a linear polynomial has one and only one 0. Now we can say that 1 is the zeros of x minus 1 and minus 2 is the 0 of x plus 2. Yet example 5, that is that they verify whether 2 and 0 are zeros of the polynomial x square minus 2x. Get the solution, let px is equal to x square minus 2x, then p2 is equal to 2 का square minus 4 is equal to 4 minus 4 is equal to 0. कहते हैं एंड क्या कहते हैं p0 is equal to 0 minus 0 is equal to 0. Hence कहते हैं 2 and 0 are both zeros of the polynomials x का square minus 2x. कहते हैं let us now list our observations. So कहते हैं a 0 of a polynomial need not be 0. 0 कहते हैं may be a 0 of the polynomial. कहते हैं third, every linear polynomial has one and only one 0. Fourth कहते हैं a polynomial can have more than one zeros. So exercise 2.2. So exercise 2.2, first कहते हैं find the value of the polynomials 5x minus 4x square plus 3 at first x equal to 0. तो कहते हैं px equal to this, तो at x equal to 0 p0 equal to 5 into 0 minus 4 into 0 का square plus 3, that is equal to 3 answer. At x equal to minus 1, so putting minus 1 in place of x we get that is 5 into minus x 1 plus minus 4 into minus 1 का square plus 3 is equal to minus 5 plus 4 plus 3, but that comes out to minus 6 answer. And at x equal to 2, so replacing x with respect to 2, so p2 is equal to 5 into 2 minus 4 into 2 का square plus 3, that comes out to 16 minus 10 minus 16 plus 3, that will minus 3 answer. Second कहते हैं find p0 p1 p2 for each of the following polynomials. p0 p1 p2 निकालना है सबके लिए, that is okay. So first क्या polynomial y is equal to y का square minus y plus 1. So पहले py लिखा, that is p0 लिखे, तो replacing y with respect to 0 we get 0 का square minus 0 plus 1, that will 1. Replacing y with respect to 1 we get 1 का square minus 1 plus 1, that's equal 1. Replacing y with respect to 2, that is equal to 2 का square minus 2 plus 1 is equal to 3 answer. So next कहते हैं second, that is pt is equal to 2 plus t plus 2 t का square minus t का cube. So replacing t with respect to what, first 0, so with 0 what we get, that is 2 plus 0 plus 2 into 0 का square minus 0 का cube is equal to 2. Second क्या कहते हैं p1, that is replacing
t with respect to 1 we get to 1 2 plus 1 plus 2 into 1 का square minus 1 का cube that's equal to 4. p2 is equal to 2 plus 2 into 2 का square minus 2 का cube that is equal to 4 plus 8 minus 8 is equal to 4. और थर्ड कहते that is px is equal to x cube, p0 is equal to 0, p1 is equal to 1 and p2 is equal to 8. Answer that is this. And fourth कहते p x is equal to x का minus 1 x plus 1, p0 is equal to minus 1 into 1 that's equal to minus 1, p1 is equal to 1 minus 1 1 plus 1 is equal to 0 and second कहते 2 minus 1 2 plus 1 is equal to 3. That is answer. So question third कहते verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. So first कहते हैं px is equal to 3x plus 1, x is equal to minus 1 by 3. Second कहते हैं px is equal to 5x minus 5, x is equal to 4 by 5. So first third में कहते हैं px is equal to x square minus 1, x is equal to x minus 1. That is हमें कहाँ शो करना है, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू माइनस 1 पे. नेक्स्ट कहते हैं फोर्थ पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 कहाँ पे शो करना है, x इक्वल टू माइनस 1 पे और -2 पर शो करना है. फिफ्थ कहते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हमें शो करना है, x इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पे शो करना है. सिक्स कहते हैं एल एक्स प्लस एम कहाँ शो करना है, x इक्वल टू एम माइनस एम बाई एल पे शो करना है. Seventh कहते that is px equal to 3x square minus 1 that is x equal to minus 1 by root 3 और 2 by root 3 पे शो करना है. और एट्थ का px equal to 2x plus 1 x equal to 1 by 2 पे शो करना है. सो फर्स्ट कहते हैं यस मतलब कि फर्स्ट यस 3x plus 1 equal to 0 4 minus 1 by 3. तो कहते हैं कि ये क्या है, zeros of polynomial है. दैट इज हमें क्या करना था कि शो करना था. सो कहते हैं वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated कहते हैं. तो फर्स्ट जो है वो क्या है, पोलिनोमियल है क्योंकि वो जीरो बनता है. सेकंड जो है नहीं क्योंकि 5x माइनस पाई इज इक्वल टू 5 इंटू 4 बाई पाई 5 माइनस पाई इज इक्वल टू 4 माइनस पाई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. थर्ड कहते हैं यस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू 1 and x का स्क्वायर माइनस 1 दैट्स इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू माइनस 1 के लिए. सो दैट इज फोर्थ कहते हैं यस x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2. और फिफ्थ कहते हैं दैट इज यस x का स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0. सो कहते हैं सिक्स्थ कहते हैं यस एल एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0. सो फॉर एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई एल. एट्थ कहते हैं सेवन्थ कहते हैं इज 3x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट 3. एंड क्या कहते हैं एंड कहते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 4 बाई 3 माइनस 1 दैट इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 0. सो दस क्या कहते हैं फॉर माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 इज अ 0 बट माइनस 2 बाई अंडर रूट 3 इज नॉट अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल. और एट्थ कहते हैं नो 2x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 for x is equal to 1 by 2. उसके बाद फोर्थ कहते हैं that is find the zeros of the polynomial in each of the following cases. तो हम कैसे जीरो फाइंड करते हैं, इक्वेशन होगी जैसे x प्लस 2 है इसको हम किसके इक्वल इक्वेट कर देंगे 0 के और जो x आएगी उनका वो क्या होगा वैल्यू होगा फॉर द zeros of the polynomial. तो let us do something. So कहते हैं फर्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. सो सेकेंड है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5.
third है p equal to 2x plus 5, and fourth है p equal to 3x minus 2, fifth है p equal to 3x, sixth है px equal to ax, a is not equal to 0, sixth, seventh px equal to cx plus d, c is not equal to 0, and c and d are real numbers. So first कहते हैं that is x plus 5 is equal to 0, x is equal to minus 5. So कहते हैं minus 5 is the 0 of the x plus 5 answer. Second कहते हैं x minus 5 is equal to 0, x equal to 5. So 5 is the 0 of x minus 5 answer. So third कहते हैं 2x plus 5 is equal to 0. This implies 2x equal to minus 5. And next कहते हैं x equal to minus 5 by 2. So क्या कहते हैं minus 5 by 2 is the 0 of 2x plus 5, that is equal to answer. And third में कहते हैं 3x minus 2 is equal to 0, that is equal to 3x is equal to 2, x equal to 2 by 3. So 2 by 3 is the 0 of 3x minus 2 answer. So fifth क्या कहते हैं 3x equal to 0, that is x equal to 0. So 0 क्या कहते हैं is the zeros of 3x answer. Sixth में कहते हैं ax is equal to 0, a is not equal to 0, that gives implies x is equal to 0 by a, that equal 0. So it is the zeros of ax. कहते हैं seventh cx plus d is equal to 0, that is c is not equal to 0. So cx is equal to minus d. x कहते हैं x equal to minus d by c. So कहते हैं minus d by c is the 0 of cx plus d, that is answer.